वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चैट एंड चाय की एपिसोड 3 में यू आर ऑल वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द विस्पर बिफोर द बर्नआउट। व्हाट you would like to share with us, Daniela, on this topic? Well, actually, a question came to my mind, and that was, have you ever noticed that before the complete exhaustion, there's always a warning, or always what I would like to say as well, instead of calling it a warning, a love letter. It might be a sigh that escapes our lips more often than not. We might be finding lack of patience with our children. We might be feeling rushed in our prayer, and meaning that our heart is feeling disconnected from that. I know I definitely have felt those in different ways, at different times. Many times I felt that too. Mm. ये जो अलार्म है ये हमें मिलता है और हम ही होते हैं जो अक्सर औकात इसको देख नहीं पाते, इस पे गौर नहीं कर पाते और बर्नआउट हो जाते हैं। लेकिन ये विस्पर बहुत सूदिंग होता है, बहुत सूदिंग होता है। और बिल्कुल जिस तरह डनियाला ने कहा कि ये लव लेटर होता है, और लव लेटर किसकी तरफ से होता है? डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में बताते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी शर्क से भी ज्यादा करीब है। तो शर्क कहाँ पे होती है, किस जगह पे होती है? तो उसका तो डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी पूरे और पूरी बॉडी के साथ। शर्क का लाइक उसका सारा जुड़ा हुआ है, कनेक्शन पूरी बॉडी में हर जगह फैली हुई है। अम, और उससे भी वो ज्यादा करीब है। जब उससे भी ज्यादा करीब है तो दैट मीन्स कि हम कुछ मोमेंट्स पे भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला हम अकेले नहीं है। तो हमें बिल्कुल वो जब रिमाइंडर मिलता है, जो अलार्म मिलता है कि यू जस्ट हैव टू पॉज, यू डोंट हैव टू रिएक्ट इन दिस मोमेंट। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कुछ और हो। बहुत सूदिंग वॉइस में होता है, बहुत हल्का हल्के से होता है, लाइक इतना वो इतना सॉफ्ट होता है और इतना जेंटल तरीके से हमें ये अलार्म मिलता है कि हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, हमने रिएक्ट करना ही करना है। और उसको फिर हम इग्नोर करके तो फिर बर्नआउट की तरफ जाता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बर्नआउट भी जब हम होते हैं तो उससे पहले हमारे पास ये ऑप्शन थी कि हम रिएक्ट करें या ना करें। ये हमारे पास डिसीजन पावर हमारे पास ही थी कि हमें इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए था, और हमने ये चूज किया कि हम बर्न आउट हो जाएं, I think we're living in a रिएक्ट world. करें। Oh, sorry. सॉरी, गो ऑन सिस। I was just going to say, I think we're so used to now living in a world that really praises the productivity and punishes the pause or the slowdown. There's so much glorification of being busy, of doing things all the time. And somewhere along the way, we've forgotten that pause. But Allah sends us these signs, or these love letters, how I like to say, or these whispers, whatever we want to call them, to slow down, to rest. Why? To come back to Him. Unfortunately, though, I think many people relate to the being busy as that being a measure of what they're worth and who they are. But that's actually not that's actually not the case. And when we start to ignore those love letters or the messages or the whispers, whatever we want to call them, we can put it off for a certain amount of time, but it can get louder.
And it can also lead to dis-ease in our bodies. Like sorry, I don't mean to keep talking, but the burnout, it doesn't just arrive suddenly. It creeps in slowly. Slowly. That's what I found as well. यस सो राइट। बर्नआउट से पहले आप एकदम से कोई भी सिचुएशन, जैसे हमें अक्सर केसेस में सुनने को मिलता है मार कुटाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मार कुटाई एकदम से मार कुटाई वाली सिचुएशन में पहुंचते तो नहीं है। गालम गलोच एकदम से तो नहीं स्टार्ट होती, उससे पहले के कुछ थोड़ा थोड़ा करके वो जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं कि बलून में आप कितनी देर तक उसमें हवा डाल सकते हो, एक लिमिट तक डाल सकते हो। जब उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर वो फटेगा। और जब वो फटेगा तो फिर उसकी आवाज भी बहुत ऊंची आएगी और उसके जो पीसेस हैं वो दूर दूर तक जाकर गिरेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जस्टिफाई नहीं करना कि हम इस वजह से बर्न आउट हुए या इस वजह से, या ये हमें प्रोवोक कॉन्स्टेंटली कर रहा था। यस, दे वर डूइंग रॉन्ग, उन्होंने प्रोवोक किया, वो कर रहे थे, लेकिन स्टिल आपके पास भी डिसीजन पावर थी, आपके पास भी पावर ऑफ चॉइस थी कि आप क्या करते। जब दे स्टार्टेड प्रोवोकिंग यू एट द वेरी बिगिनिंग, आपने क्या स्टेप लिया या आपने क्या किया कि आप उस सिचुएशन को ज्यादा वर्सन ना होने दो और आप अपने आप को बर्नआउट की तरफ ना लेकर जाओ। तो एट द एंड ऑफ द डे पावर ऑफ चॉइस, पावर ऑफ डिसीजन आपके अपने हाथ में है, अपने हाथ में ही होता है। सिचुएशन कोई भी ऐसे नहीं होती। अक्सर औकात मैंने ये सुना है, लाइक जस्ट फ्यू डेज बैक आई वाज समवेयर एंड मैंने एक सवाल किया कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा जब पीक पे जाता है, तो क्या क्या आप लोग करते हो। तो मुझे उसके जवाब में जो कुछ सुनने को मिला, आ, उससे भी फिर यही पता चलता है ना कि कोई भी सिचुएशन ऐसे ही नहीं उस पॉइंट तक पहुंच जाती, उससे पीछे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उससे पीछे बहुत कुछ होता है। और जैसे कि डनियाला ने भी शेयर किया कि हमारी सोसाइटी में पॉज को एक कह लें कि बहुत बुरा समझ समझ लिया गया और बेइज्जती समझी जाती है कि जब तुमसे पूछा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा आपसे कुछ पूछ रहा है, तो आपको उसी उसी टाइम जवाब देना है। Why you have to respond them at that particular time? You don't have to. आप उनको बोल सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप हट जाओगे या आप जो है वो जिस तरह आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए आप उस तरह नहीं कर पाओगे, तो यू कैन सिंपली टेक अ स्टेप एंड यू कैन सिंपली एक्सक्यूज देम कि अभी मुझे नहीं लगता कि मैं उस तरीके से बात कर पाऊंगा जिस तरह मुझे करनी चाहिए। मैं खुद बहुत थका हुआ हूँ, अम, मैं खुद बहुत इस टाइम बर्न आउट हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। आई वुड श्योरली गेट बैक टू यू और इस पे हम मजीद बात करते हैं। मेरे ख्याल से इसको एक इज्जत इज्जत के तरीके से इस तरह देखा जाए तो बहुत बेहतर हो जाता है, रादर दिन कि आप फटो। और यस, इट्स सो ट्रू कि हमारी सोसाइटी में इस तरह बोलना बेइज्जती समझा जाता है कि आपने अगर छोटे ने अगर इस तरह बोल दिया या उस टाइम पे जवाब नहीं दिया तो दैट मीन्स कि उसने बेइज्जती किया और डिग्रेड किया। लेकिन इन रियलिटी वो, हाँ, आपको ऐसे लग रहा है बिकॉज आप अपनी थिंकिंग में इतने ज्यादा, आप अपनी इगोइस्टिक थिंकिंग में इतने ज्यादा इंडल्ज हुए हुए कि आप इसी इसी टाइम बच्चे से या छोटे से जवाब लेना चाह रहे हो। व्हाई इज इट सो? सिचुएशन को अगर टैकल करना है तो सिचुएशन को तरीके से भी तो टैकल किया जा सकता है। आप थिंकिंग में हो और आपकी ये डिजायर है कि भाई इसी, और आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि इसी इसी टाइम जवाब दिया जाए और इसी इसी टाइम इसका हल किया जाए। हर चीज का सोल्यूशन उसी उसी टाइम के अंदर नहीं होता। कुछ भी हल करना है तो
थोड़ा सा कभी कभार कुछ जगहों पे गैप देना भी जरूरी होता है। इट डिपेंड्स के कौन सी सिचुएशन है, किस तरह की सिचुएशन है। लेकिन इट्स ट्रू कि उसी उसी टाइम जवाब देना जरूरी नहीं होता। तो इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि हम इसको समझें और इसको अपनी अन्ना का मसला ना बनाएं। जब कोई टाइम लेना चाह रहा है तो उसको, और वो आराम से कह रहा है, बता रहा है, तो हमें दे भी देना चाहिए उसको टाइम, ताकि लोग, मैं अक्सर औकात ये बात कहती हूँ कि लड़ाई झगड़े और जंगों से मामलात हल नहीं होते। जितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, जितने बड़े बड़े जंगें होती हैं, इनके हल जो है मोस्टली टेबल टॉक पे ही निकलते हैं। तो टेबल टॉक पे निकलते हैं, इट्स ट्रू, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि उसी उसी टाइम निकले जिस टाइम आप चाह रहे हो। तो समटाइम्स थोड़ा टाइम लगता है, और अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर कोई दूसरा भी टाइम मांग रहा है तो, रादर देन कि हम बर्नआउट की तरफ जाएं, सिचुएशन वर्सन हो, एस्केलेट करें। इट्स बेटर कि हम वो जो विस्पर आते हैं बर्नआउट से पहले, हम उसको सुन लें, और ताकि हम अच्छे तरीके से जो है वो फर्दर ऑन प्रोसीड कर सकें। I think as well, like especially like us women, wherever we're living, a lot of women now are not only mums or parents or mums, they may also be working. They also got the responsibility of looking after the family and whatnot. So we're taking on different roles and responsibilities, and these expectations that are put upon us by society in general as women. It wasn't always like this once upon a time. It was different. And now I think women in particular are really feeling that the sense of feeling drained. And we think that something is wrong with us. But actually, nothing is wrong with us. It's just that we haven't paused, we haven't taken that break. And what I really like about the love letters that Allah is sending us, or the whispers, is that when we really stop and think about it and look within, Allah's given us all the answers to our problems. As He says in Surah Al-Baqarah, Allah does not burden the soul beyond more than it can bear. And that really is. Maybe we're taking on more of these responsibilities that weren't for us to carry in the first place. They weren't meant for us in the first place. So how do we put these responsibilities down? How can we let go of some of these responsibilities? Do we need to be doing everything? These are some of the questions that we can be asking ourselves as to why we're feeling burnout. Maybe it is actually when we do feel the sigh coming off of our lips, or we are feeling impatient with our children at times, is actually to take a pause, take a rest, even if it's for 5 minutes. That may be enough well, actually, if we want to really say, let's talk about children, or as parents, as mums, if we take that rest, then we can't be saying anything bad. How I like to say is zipping our lips and putting our hands in our pockets, because we can't be saying anything bad then. And when we put our hands in our pockets, is that we can't do anything bad either. Just by taking that pause. That's a mercy from Allah to take that. He doesn't want to burden us. And sometimes that pause is so enough for our body to slow down so that the rest of it can catch up. I'll give an example actually. Just actually, even on Monday, so having traveled to Pakistan and now back home in Australia, I didn't feel it when I was over there, but coming back, I really felt the jet lag. And on Monday, I went for a walk. I felt good enough to go for a walk, though I was very tired. And honestly, I felt like halfway through the walk, my head and my body were two different ways. And I thought, how am I going to bring my body and my head to get, it was connected, of course,
but enough to slow down and just pause. And so what I did after that I got home was I came back and I rested. And you know what? I didn't feel guilty. We don't need to feel guilty by resting. If our body, and I think that's a big dilemma that we can have, is that feeling of feeling guilty. Why? Because we are wanting to, or society has now put on us, I'm talking about as women, this thing to always be busy. But we can't, because we'll run on empty. And that's when we feel the burnout. एब्सोल्युटली। जैसे एक एग्जांपल कैथरीन भी बहुत ज्यादा यूज करती हैं, मास्क किसी और का लगाने से पहले, प्लेन में मास्क किसी और का लगाने से पहले पहले मास्क अपने आप को लगाना होता है, ताकि आपका अपना कप फुल होगा तो फिर ये आप दूसरे में डाल सकते हो ना। So important. तो व्हेन वी गॉट मैरिड, और फिर जब बच्चे भी हो जाते हैं, एक डिफरेंट फैमिली और सब कुछ एक डिफरेंट होता है, तो फिर ये वाली चीज कहाँ पे चली जाती है कि we have to take care of our own selves as well. Not in just that sense that we have to get ready, we have to prepare our own self, we just have to do a makeup, we have to do a better dressing. It's not just about that. Taking care of yourself सिर्फ इस चीज का तो नाम नहीं है कि आप मेकअप कर लो, आप ड्रेस अच्छा पहन लो, आप एक अच्छे अटायर में आ जाओ, सिर्फ इसका नाम तो नहीं है। सेल्फ केयर में और भी बहुत कुछ आता है। आई डोंट नो, हमारा लास्ट टॉपिक भी कुछ इसी से रिलेटेड था, लेकिन उसके बाद से मेरे माइंड में एक वर्ड आ रहा था, मिरर। हम क्या करते हैं मोस्टली, जब हम मिरर के आगे जाते हैं तो मिरर के आगे जाकर हम सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हम तैयार हो जाए, हम मेकअप कर ले, हम कैसे लग रहे हैं। और another day I was being told, why not to just go there and stand in front of the mirror और अपने आप को देखो the way you are right now in this moment, without having any kind of a blind in front, just देखो कि तुम हो कौन। थोड़ा इस चीज से निकल जाओ कि तुम्हें मिरर के आगे जाना है तो तुम्हें सिर्फ मेकअप करना ही जाना है, तुम्हें सिर्फ अपना आप देखना ही जाना है कि तुम कैसे लग रहे हो। मिरर आपको अपना आप भी दिखाती है। और अपने आप को देखने हम कब जाते हैं मिरर के आगे, हम अपना आप तो देखने नहीं जाते, हम तो सिर्फ अपने आप को मेकअप करने के लिए उसके आगे जाते हैं, अपना आप छुपाने के लिए उसके आगे जाते हैं। तो इट्स जस्ट अबाउट हाउ वी आर सीइंग थिंग्स, from which angle we are looking at things. तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा शिफ्ट करें अपने आप को, अपना सिर्फ मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें ये था कि एक ये हकीकत आपको लग रही होती है ना कि ये हकीकत है, ये ठीक है, ये सही है, ठीक है। लेकिन जब आप उससे ऊपर की एक चीज देखते हो तो उधर भी ये होता है कि वो एक अलग हकीकत का रूप होता है, ठीक है। और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ऊपर जाते हो तो फिर वो वाली स्टेज पे आती है जो वो स्टेज खुद बता रही होती है कि देखो ये भी हकीकत है। तो हकीकत के मुख्तलिफ रूप हैं। अगर हकीकत में हम जाते रहेंगे कि हकीकत क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता कहीं पे खत्म हो पाएगा। और अगर हम सिर्फ इसी में रहेंगे कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम आगे भी बढ़ पाएंगे। बट इट्स जस्ट लाइक कि वी जस्ट हैव टू सी आवर ओन सेल्व्स एज वेल। एक चीज को
मुख्तलिफ तरीकों से देखना चाहिए, और एक चीज को देखने के मुख्तलिफ तरीके भी होते हैं, और हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप में होनी चाहिए कि हम अगर एक चीज को देख रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि ये ठीक है, तो थोड़ा सा उसको वो कॉर्नर दें कि हो सकता है कि ये ठीक ना भी हो। इसके इसके आगे और बहुत सारे रूप हों। रूप नॉट इन दैट नेगेटिव सेंस, बट इन दैट सेंस कि इसी को देखने का एक और नजरिया भी हो, तो हमें वो नजरिए देखने चाहिए और रिस्पेक्ट करने चाहिए कि अगर हमारा एक देखने का नजरिया है, तो नेक्स्ट पर्सन का भी देखने का नजरिया हो सकता है। अगर उस स्टेज पे आप नहीं फिलहाल पहुंच सकते, तो जस्ट स्टार्ट कि आप दूसरों को सुने, एक चीज पे दूसरों का क्या पर्सपेक्टिव है, दूसरों का क्या एंगल है देखने का। तो इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप को भी देखें। बर्न आउट होने से पहले, जब सिचुएशन वर्सन की तरफ जा रही है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन इन वन पर्टिकुलर सेंस, ये हर मामले में इन रिलेटेड टू द हेल्थ, in related to our diseases, and related to our own selves, and related to our relationships, and related to our children as well. Mm. तो ये हर चीज में जो है मायने रखती है कि सिचुएशन कोई भी एकदम से नहीं बर्स्ट होती, उससे पहले आपको अलार्म्स मिल रहे होते हैं, और वो अलार्म्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें उन अलार्म्स को सीरियस लेना चाहिए, rather Can than कि हम उससे भागे। या गो ऑन। let me share something with you, with everyone. श्योर। You know, the alarms, and this is what I like to say. First, there's the awareness. So we start to notice the signs within us before they become loud. So it might be an itch on our hand every time we get anxious. It might be the impatience that we're feeling towards our children at times. It might be an extra sigh when we are feeling tired. All these little signs, big or small, when we become aware, it's just noticing these, like having that awareness. And then what we can do is listen. So tuning into our body, in our heart and our mind, and asking it what it's saying. What does it mean? Do I notice all the time that I get an itch on my hand every time I'm feeling anxious? It could be a possibility. I don't know. You might feel something else when you get anxious. It might be whatever. So that's the second part. So there's the awareness, and then to listen to what it is, you know, to tune into what it is. Then there's the acknowledgement. So accepting what we're feeling without the judgment. And that's an important part, without the judgment, without judging ourselves that we may be feeling tired or we may be feeling irritable. No, it's a love letter. Accept it as that and be okay with that. It's there for a reason. It's there to protect us from anything worse later on, if we listen to it, if we are aware of it. And then there's the reflection. So we might ask ourselves, what might it be that Allah is trying to show me right now? What is it that I need to be doing right now? Asking, having that self-reflection is so important. And I think a lot of the time we forget that part in our lives, that reflection within. The next part becomes about making the space. So creating those pauses for the rest, for our prayer, for our renewal, or instead of renewal, I like to say for that rejuvenation. Rejuvenating ourselves, as you were saying, putting our own oxygen mask on first before attending to others. We need to do that. That's not being selfish either. That's actually good for us, because we got to help ourselves before we help others. Because if we're not helping ourselves first, then it will lead to burnout, because it could be then people pleasing. And so we can't say no and all these sort of other things. But when we actually stop and we look within and reflect and ask all these other questions,
we can, all those love letters or the alarms help us. And then there's the surrender. So releasing that control and returning to Allah subhanahu wa ta'ala in tawakkul. Because quite often than not, we will be lacking that tawakkul. Because we want that control, or we want to be doing things. And of course, that's when it leads to overthinking and the burnout, and because we're racing to do the next thing. But it actually doesn't work like that. If we think of these little signs or the whispers, love letters, alarms, whatever we want to call them, as a question for ourselves, actually, what is it that Allah is trying to show me? That's a big part of it, I think. We may not see it in that moment, but I think that's a big part of it. SubhanAllah. And there is another thing I've noticed as well, sis. And related to the children, because हम अपने आप को अपना सेल्फ केयर और जैसा स्टेप्स बताए डनियाला ने, जब हम नहीं करते, या हम जब करना होता है तब हम नहीं करते और अनकॉन्शियसली उसको रिपीटेडली करते जा रहे होते हैं, और बच्चे भी फिर जब वो देख रहे होते हैं तो वो सीख रहे होते हैं। फिर एक टाइम आता है कि जब, बिकॉज उन्होंने तो ये देखा है, ठीक है, जब उन्होंने देखा है तो उन्होंने ये सब कुछ एब्जॉर्ब किया, जब उन्होंने ये सब कुछ एब्जॉर्ब किया और जब उनमें ताकत आने लग जाती है, जब वो खड़े होने लग जाते हैं अपने पाँव पे, और जब पेरेंट्स देखते हैं कि आज हमारी औलाद हमारे आगे बोलने लग गई है, तो उस टाइम पछतावे के बजाय, उस टाइम ब्लेम गेम करने के बजाय, वी जस्ट हैव टू सी इन आवर ओन सेल्व्स कि ये हमारा ही किया धरा है, ये हमारी ही फ्रस्ट्रेशन है, ये हमारे ही पैटर्न्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। उस हद तक पहुंचने से पहले अल्लाह ताला ने बहुत सारे अलार्म्स दिए थे हमें, बहुत सारे टाइमिंग्स ऐसे आए थे, बहुत सारे तरीकों से अल्लाह ताला हमें बता रहा था, हमें सिखा रहा था कि यू जस्ट हैव टू स्लो डाउन, you just have to take care of your own self, you just have to see where you are and what's going on for you, rather than कि आप अपने अपने आप को, rather you are male or female, अपने आप को कामों में बिजी रख के, पैसे के पीछे लग के और इधर उधर भागने और इधर उधर देखने के बजाय, अगर हम उन टाइमिंग्स पे ये देख लें कि भाई हम कहाँ पर हैं और हम भी कुछ हैं, अगर हम आज अपना ख्याल रखेंगे तो इट वुड बी बेटर कि हम दूसरों को फिर उतने अच्छे तरीके से देख भी पाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा ही किया होता है जो हमारे आगे आ रहा होता है, बट रादर देन कि देर हो जाए, हमें पहले ही स्टेप्स ऐसे और मेजरमेंट्स ऐसे ले लेने चाहिए कि हमें सिचुएशन इतनी वर्सन ना हो। और वंस अगेन आई वुड जस्ट लाइक टू रिपीट दैट कि कोई भी सिचुएशन वर्सन एकदम से नहीं होती, स्लोली एंड ग्रेजुअली होती है। कुछ इवन की कुछ सोसाइटीज में, कुछ फैमिली स्ट्रक्चर में मैंने ये भी देखा है कि जब तक पानी सर से गुजर ना जाए, जब तक कुछ एक्सट्रीम ना हो जाए, वो देखते ही नहीं है कि भाई उनको कि ये चीज मायने नहीं रखती कि कुछ हुआ है या हो रहा है, वो बस समझते हैं कि ये हो गया है, ये हो गया, और बस तब तक इंतजार करते हैं, तब तक कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ इग्नोर करते हैं, भागते हैं उससे। तो फिर क्या होना है, फिर आप खुद वो सिचुएशन चाह रहे हो ना कि वर्सन की तरफ जाए, जब आपके पास टाइम होता है आप उसी टाइम देखो ना, उसी टाइम आप ध्यान करो, rather than कि situation worsen हो जाए, burnout की तरफ जाए। I think the one thing as well that we need to recognize is that taking the time out, taking that pause, taking the rest, whatever it is, can be an act of worship as well. Rest is an ibadah if it's done with the right intention. I think last week we talked about intention. So if we bring it back to that and really tying our rest to that, or the pause to that, obviously tying our intention to the pause is what I mean. That can be, it becomes like an act of worship to renew our energy. For might be our prayer, might be so we're
there energetically with our children or for the family, whatever it is. But when we set that intention for the pause or the rest, whatever we want to call it, the break, as a means to being in the present moment, because actually if we're on burnout or if we're heading towards that way, or we're receiving all these letters or love letters, we're not in the present. We're on auto drive. We're constantly striving to do the next thing, and that's not presence. Because actually with the presence, there's a calm that we still may be busy, but we're not getting overwhelmed with the busyness. It's just in the right timing. It's slowing down to that speed of tawakkul, to the speed of life, not racing up to meet everybody's demands and needs. And I think as well, if we reframe our mindset with the pauses, with the love letters, with the reflections, and think of it like this, our body has a right over us. That's a hadith in Bukhari. If we think of it like that, it's a lot easier for us to then stop and ask ourselves, is this the right thing for me? Do I need to race on ahead? Or can I stop, even if it's for a moment in time? I think that's so important, because if we don't listen to these love letters that Allah sends to us at any given time, it will lead to something more major. And as an example, a friend of mine, she wasn't listening to the love letters that were given to her, or the little wake up calls, let's say. She was hearing them, but not hearing them. And what happened is that she fell and she broke her wrist. So she actually had to stop. There was nothing that she could do. She couldn't work. Her work then became very limited. And so these are the things that happen, major things that happen when we don't listen to these little love letters, which aren't actually little, they're actually quite big, but we may ignore them. And something else is coming to me as well, sis. Pause has nothing to do with our phones and with the screens. Oh, yeah. Most of the times हम क्या करते हैं कि रेस्ट लेने के बहाने साइड पे होते हैं और साइड पे होके we start using phones, we start using our screens rather game or whatever. We started doing that, और वो आप रेस्ट नहीं ले रहे, वो आप भाग रहे हो, वो आप एस्केप कर रहे हो, या आपका एस्केप प्लान है. और यस, डिफरेंस सिर्फ इतना आया है कि पहले अगर आप चल फिर रहे थे तो अब आप बैठ गए हो. पहले अगर आप किसी और चीज में इंडल्ज थे, आप किसी और चीज में इंडल्ज हो गए. तो डिफरेंस, मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, चेंज कुछ भी नहीं हुआ. पॉज में ये होता है कि यू जस्ट हैव टू बी देयर विद योर ओन सेल्फ. वो जिस तरह मर्जी पॉज करो, वो मेडिटेशन के थ्रू करो, वो वो ग्राउंडिंग करो. इट डिपेंड्स कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हो. And that's exactly right. It doesn't have to be you sitting there doing nothing either. Sometimes for me, it's about being in my garden, because then I'm doing something, but it's something that is, for me, rejuvenating, or going for a walk where my mind is at ease, where I'm not thinking about the to-do list, or I'm not thinking about whatever. It's just being present. And I think that's what I'm talking about with the pause. It's about being present, coming back to this moment in time, without the past or the future, but in this moment in time. Sometimes it is about resting, literally, because our body can't take it anymore. So I might be laying down for a sleep. But sometimes you actually might be doing things. Like, for me, I love being in my garden,
because it's a way for me to just let go of all the digital stuff and have the dirt in my hands. I love that feeling. And then seeing my flowers or the fruits and the vegetables grow as the season continues. I find peace in that. It's not always about stopping and doing absolutely nothing. It's about doing something that rejuvenates you in a way that is good. You're so right. In a way, that is good for you, for your physical health, for your emotional health, for your spiritual health as well. We have to be very much mindful about this thing कि हम कौन सा pathway use करें अपने आप को relax करने के लिए. वो pathway हमें consciously choose करना चाहिए. जो भी हम choose कर रहे हैं हमें consciously करना चाहिए. और yeah. Yeah. So I was just thinking, if anyone is feeling stretched thin right now, maybe this is your alarm, maybe this is your whisper about, and that Allah is calling you back to an alignment or to that softness and to that peace. We don't have to fall in a heap to deserve rest. No, we deserve that rest before anything. We don't need the burnout in order to earn the pause. That's our ego really thinking there, that we need to earn it. No, it's there for a reason. In whatever way that looks, whatever way that pause looks for, as we were just explaining. So I don't know about you, Anam, but I think this might be a really good space to stop. But I think you just, as we go about this week, if we just think of one simple act of slowing down, or how we can slow down, or maybe it is about just having that awareness and reflection, coming back and remembering Allah. When we slow Yeah, down as well. Oh, that. sorry, Anam. Go on. I was just going to say, when we slow down, we don't fall behind. We just fall into our own rhythm, our rhythm of life, rather than somebody else's rhythm. At the end of the day, you're gonna suffer. Mm, And you have to face that thing by yourself. हाँ, yeah, अभी ये है कि अभी क्योरेबल हो सकती है, लेकिन जब वो एक्सट्रीम पे चली जाएगी तो वो माइट पॉसिबल के रिवर्स होने के चांसेस खत्म हो जाए. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जो पॉज है, जो पॉज मिल रहा है उसको ले लें. beautiful. Absolutely. Jazakallah khair for joining us today in today's episode. May you find peace in your pause and the barakah in the slowing down. Ameen, Sumameen, Jazakallah khairan kasira for being here with us. Take a very good care of yourself. Inshallah, next एक नई episode के साथ आएंगे, नया topic लेकर. Till then, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. Wa alaikum assalam.